Very good morning to all. Yeah. Hi, good morning. Very good morning to all. We have discussed in the last two sessions about the regular expressions and the finite automata. Right. I hope you are following the classes and watching regularly. And the next session after today, the closure properties and regular and non-regular languages. Tomorrow we'll have a practice on the complete regular languages. Any concept which is not covered in continuity, we will be covering through practice on questions. So that is another way to cover the concepts in the session. Okay. Cash. Okay. Good morning, Deepak. Anybody is facing difficult in the subject, one way is give enough time to understand, right? You are looking at once in a while, then it could be difficult to understand the logic behind every concept. If you are spending much time regularly, then you will understand the concepts clearly. It's not about just UOC. Anything that you are facing difficulty, just have a patience, give enough time, you can understand easily. Of course, takes time, that's all. Okay, great. Are we good to go? Yeah, namaste, Nageshwar. Shivam, good morning. Right. Is my voice, audio? Yeah, audio and video, everything is fine. Just let me know, guys. Yeah, a very important session again. This session will have much impact in exam. As you know, the closure properties, regular, non-regulars, again will have 2 to 3 marks. The regular expressions will have the around 2 to 3 marks weightage. Now also you will have 2 to 3 marks weightage. Good morning, Yashu. So fine, great. Yeah, good morning, Amrit Paul. That depends on you, Saurav Kumar. If you have a time, you can spend, you can discuss. If you don't have the time, you can give time for other preparation. Okay. Yeah. Good morning, all. Chalo. So in this session, we'll be focusing on many things like regular languages, non-regulars, closure properties. Okay. So we will see first. We know what is regular language. Can you put in the chart what is regular language? Okay, we'll discuss regular, non-regular, then closure properties, and also will include finite and infinite languages. Okay, may I know what is regular language? Have you defined the term which is accepted by DPA? Great. बहुत सारे definitions है. You have a lot of definitions to say what is regular language. आपको जो पता है वो बताना. You just tell what is you are aware. You can write regular expression for every regular language, which can be expressed in terms of regular expression. Very good. Which is represented by a regular grammar. Perfect. Have you seen regular language? It's having a lot of definitions. Any language having regular expression, that means it is a regular language. Okay, so it means now there are also non-regular languages. Now can you tell me what is non-regular? Okay, try to understand first what is regular and non-regular. Okay, ready? First we will focus on what is regular and non-regular. We'll focus now. The language is two types, or languages are two types: regular languages
and other one non-regular languages. आपको पता है यार, रेगुलर लैंग्वेज मतलब इनके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, इनके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा होगा, इनके लिए रेगुलर ग्रामर होगा, राइट? बट नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए क्या होगा, बताना जल्दी। गुड मॉर्निंग शाहीन। एग्जैक्टली, ए लैंग्वेज विच इज नॉट हैविंग रेगुलर एक्सप्रेशन, इसका अपोजिट बोलना है बस। इज इट क्लियर? या क्या बताएंगे, रेगुलर लैंग्वेजेस क्या है? एक्सप्रेस्ड बाय और रिप्रेजेंटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशंस, फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर ग्रामर, है ना? ये सारे बोल सकते हैं आप। या नॉट रिप्रेजेंटेड, सिंपली do not have regular expression, do not have a finite automata, do not have regular grammar, not possible, impossible to represent, not represented by, not possible. Is it clear? जो लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होगा वो लैंग्वेज नॉन रेगुलर होगा, जो लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं होगा वो नॉन रेगुलर होगा, जो लैंग्वेज के लिए रेगुलर ग्रामर नहीं होगा वो नॉन रेगुलर होगा। बात क्लियर? तो जो क्या लैंग्वेजेस है वो नॉन रेगुलर है। देखो अब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखा होगा इधर उधर, राइट? लाइक ए प्लस बी होल स्टार रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, राइट? ए प्लस बी होल स्टार, इसके लिए डीएफए डिजाइन कर सकते, ये एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन है तो रेगुलर है, ठीक है? ए स्टार बी स्टार ये रेगुलर है नहीं यार, ऑलरेडी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है तो रेगुलर तो है। और ऐसा स्टार्टिंग विथ ए सिग्मा स्टार, है ना? ए प्लस बी होल स्टार जो भी है, सिग्मा इज इक्वल ए कामा बी मान रहा हूं मैं, आई एम जस्ट अज्यूमिंग सिग्मा इज ए कामा बी। Like that you have lot of regular languages, right? So many regular languages. How many regular languages you have? How many regular languages you have? Please respond in the chat here, because you can get a lot of information if you discuss. अब बताना, what is non-regular? Do you know any non-regular language जो regular expression से represent नहीं कर सकते? यहां भी infinite non-regular languages है। वो क्या है? ए पावर एन बी पावर एन, इसके लिए कोई रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, ये सिंपली some set form, like if you are representing a set, just a set form, a power n b power n, इनके लिए कोई रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, राइट? अगर a स्टार b स्टार लिखा है तो एनी नंबर ऑफ एस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बेस, बट ये एनी नहीं है, इक्वल नंबर ऑफ एस एंड बीस, ये है a पावर n b पावर n। यार पीडीए मत बोलना, पीडीए हो सकता नहीं हो सकता, नॉन रेगुलर लैंग्वेज के लिए कभी कभी पीडीए भी नहीं होता है। समटाइम्स you do not have even PDA for non-regular languages, है ना? Not context free language देखो वो भी नॉट रेगुलर है। और क्या होगा नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस? ऐसे वाले बहुत सारे लैंग्वेजेस है, W such that W belongs to A comma B whole star, infinite number of regular नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस है यहाँ भी। तो आपको पता होना चाहिए अभी यार दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस है, उसमें सम लैंग्वेजेस आर रेगुलर, सम लैंग्वेजेस आर नॉट रेगुलर। मे बी करेक्ट शेयर। ठीक है, बात क्लियर? लैंग्वेजेस आर टू टाइप्स, क्यों हमको पता है अभी रेगुलर लैंग्वेजेस क्या है, व्हाट आर द रेगुलर लैंग्वेजेस, and now we are also going to learn non-regular languages. Are we ready? I'm going to write some languages, just let's discuss, because in the exam it is very important, identifying regulars and non-regulars, identifying regulars and non-regulars. This is exam point of view topic. Okay, tomorrow all the topics will be covered through questions, but today very special for the exam point of view, identifying the languages, what are the regular, what are non-regular.
1. A power m, b power n such that m is equal to n and m comma n greater than or equal to 0 if not mentioned anything. Okay. Okay, tell me which languages are regular, which are not regular. This type of questions possible in the exam. Just understand which one having regular expression or which one having finite repeater or which one having grammar. Any one of them is there, that's fine. If one is there, all of them are all models possible. The first one we know, m and n, we have to compare for infinite time, like every value of m you have to check n also. All are non-regular. Who is that? Share. Irregular word is not there. Not regular, that's fine. Don't say irregular. These words are not there actually. Okay. If anybody uses, it's fine, but use regular, not regular, or non-regular is also fine. But irregular, that's not the word. This is not regular language. Reason we don't have regular expression. There is another important point for not regular, for a non-regular language, there is another important point. You take any non-regular language in the world, it is going to have infinite number of equivalence classes. Like you cannot design a finite repeater. If anybody want to design a finite repeater, it will never end. That means you will require infinite number of states. So that's one of the important point for non-regular. The 𝐂𝐸-𝐬𝐬 is proved using the theorem, like any non-regular language will have infinite number of states, infinite number of classes. That is the reason the language is non-regular. If the language is regular, you will be having few states, finite number of states, where you can design a DFA. If you design a DFA, you will be having the finite number of states. You don't have a DFA, that means you will have infinite number of states, that means infinite number of classes. So remember one point, keep a note, direct theoretical statement 1. For every regular language, the 𝐂𝐸-𝐬𝐬 theorem proves, like every regular language, for every regular set or language, finite number of equivalence classes present. If you take a non-regular language, impossible to design a DFA, it means you will be having infinite number of states or classes for every non-regular or not regular. Of course, no need to prove it. If you are able to remember it, or we can prove it, but in the first track everything is not required. Even for the gate exam also not required. That's why I'm not looking at exactly, I'm not showing you exactly how the finite and infinite, but very easy. You can design a DFA. How many states are there in a minimum DFA? Obviously finite. Each state in a minimum DFA represent one class, one equivalence class. Now you cannot design a DFA. If anybody trying to design a DFA, it will never end up. That means infinite states required. It means infinite equivalence classes. Very simple. Okay, so every point, that's why I'm saying, even though it is a fast track course, almost important and required points needed for the exam will be covered here. Okay, are we ready? Second one, is it same as A star B star? Can I design a DFA with few states only? Of course, DFA always have finite number of states. Can I design a DFA for this? Yes. So it is regular.
Regular set, regular language, both are same obviously. M not equal to n. See, now M equal to n you are not able to check because it takes a lot of time. If anybody designs M equal to n, do you know how it happens? If anybody try to design this machine, infinite states, why it takes, do you know? It means what are the strings are there? Epsilon, AB, double A, double B, triple A, triple B, correct? And so on. Now, if anybody trying to design a DFA, look at epsilon should be accepted, okay? And then AB, you need to remember it through the states only. You cannot store anywhere. And 2A, 2B, 2A. You have to remember 2B, then you have to go final. Then I'll go this way. Triple A, I need to remember somehow using the states. And triple B, 1B I go here, and second B I come here, and third B. So this will never end up, right? This is going to represent A power n, B power n, but see, to come here, AB, double A, double B, triple A, triple B, 4A, 4B. So this will never end up. If you try to design a finite automata, you will be having infinite number of states, but that is not a finite automata at all. Infinite number of states required, and finite automata contain only finite number of states. That's why, here each state represent one class. Each state represent one class. So this is what the Mahil theorem proves. Every non-regular language requires infinite number of states. That's why finite automata doesn't exist. Okay. Now this is also same problem. To understand M not equal to n, and you cannot have with the few states, you require infinite states. That means DFA does not exist. It is also not regular. And comparison, again M less than n. So if you want to check how many A's and how many B's, and with few states you cannot. If anybody does, now we can disprove them. Oh, you cannot design a DFA for that. All clear? First 4 problems. Okay, now it's your turn to identify. Simple language like A power prime. Very interesting concept. 6. A power m such that m is equal to even. 7. A power n square. 8. A power 2 power n. A power n factorial. This kind of questions are happening in the exam. Hundred n. So what concept you will use? If you look at all these languages, what is the sigma here? The sigma is here only one symbol, that is A. In the language, you have only one symbol. When you have only one symbol, you have a one concept like they have a relation. What is your doubt, H.C. Verma? ये डाउट नहीं पूछा, डाउट चाहिए इनको यार, दुनिया में कहाँ से आते रहे. A power prime. See, when you write A power prime, what do you mean by prime number? Prime means 2, 3, 5, 7, 9 is not a prime, 11,
And for this, it's impossible to design a finite automata, or and you cannot have a regular expression too. The problem is there is no pattern that looks like arithmetic progression. Is it clear? A power prime जो prime series है, it's not the arithmetic progression series. It's not forming AP. Which one will form AP basically? Anybody knows? The AP series, arithmetic progression series. Example, if you have something like 2n, this is AP series. Why? If you put n is equal 0, n is equal 1, n is equal 2, n is equal to 3, and this is AP series. 2n plus 100, this is also AP series. Q starts with 100 because put n is equal 0, n is equal 1, 102, then 104. This is AP series. And you can put anything like 3n plus 5. Even this is AP series. Why? N is equal 0, then it's a 5, and n is equal 1, it's a 8, and it just 3 is the distance. 11 plus 3, 14 plus 3, 17. So if you look at the AP series, always looks like distance is 2 here. Plus 2, you have to do that's it. Plus 2, plus 2. There's 2 length is the distance here. Here something like even it's same. Here plus 3. Correct? I guess, right? When you have a language over one symbol, you need to focus on, is it really forming arithmetic progression? What is the advantage of having AP? So now focus on where the AP begins. Suppose AP begins from here. Come here, and just put a cycle of 2 length. Now look at, if I have a language a power 2n, what I do is, because the languages, a square a power 4. आपको क्या करना है? तो एप्सिलॉन को पहले एक्सेप्ट करना है. यहां से एपी स्टार्ट हो रहा है ना, आफ्टर एवरी 2 years यहां पे आना है. तो आफ्टर एवरी 2 years 1 ये कहीं पर जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा दूसरा ए. देखो आफ्टर एवरी 2 years यू कैन कम टू फाइनल. तो यू कैन मेक accepting of all the strings by using the cycle. The cycle is just the distance which is there in the AP series. If the 2 is the distance, try to take care of the 2 length cycle while designing a DFA. It can accept all the strings in the given language. ये बात क्लियर सबको? इसलिए हमको AP सीरीज देखना होता और बाकी सारे सीरीज जरूरत नहीं. हमको सिर्फ AP सीरीज जरूरत है कि उससे साइकिल पॉसिबल है. तो इसमें AP सीरीज देखो 2 है, 2 के बाद 3 यार 1 लेंथ है, 3 के बाद 1 लेंथ नहीं है, वो 5 है. यार आप डिसाइड नहीं कर सकते कहां AP सीरीज स्टार्ट हो रहा है. कम से कम 11 से स्टार्ट होगा क्या? वहां से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है. अगर 11 से स्टार्ट होगा तो ये तो मैं केयर करूंगा इंडिविजुअल स्टेट लेके. बाद में यहां से साइकिल फॉर्म हो रहा है तो कर दूंगा, बट साइकिल तो कहीं से स्टार्ट नहीं होगा. ठीक है, बट AP सीरीज यहां से स्टार्ट होना जरूरत नहीं, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता, बट वहां से इन्फिनिट तक मेंटेन करना चाहिए. बट यहां मेंटेन नहीं हो रहा है तो यू कैन नॉट डिजाइन ए DFA. एंड m इज इक्वल इवन. देखो ये m इज इक्वल इवन मतलब a पावर 2n है, a पावर 2n. तो अभी तो बताया दिस इज द रेगुलर. करेक्ट? सो दिस इज रेगुलर, दिस इज नॉट रेगुलर. वेरी सिंपल. एंड n स्क्वायर बताना, ये n स्क्वायर AP सीरीज से नहीं है. ये कितने लोग को पता? n स्क्वायर 2 पावर n और n पावर n और n फैक्टोरियल प्राइम, ऑफ कोर्स n क्यूब भी, n क्यूब, n पावर 100 पावर n, है ना? ये सारे नॉट फॉर्म्स AP. ये भी सीरीज है, राइट? n square is a series. Like if you have n is equal 0 and n is equal 1, n is equal 2, 4, n is equal 3, 9, ये सीरीज है. तो 2 पावर n मतलब 2 पावर 0 1, 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, ये भी एक सीरीज है. और n पावर n, लेना 0 पावर 0, let's say 0 पावर 0, avoid it, it's undetermined. Let's say 1 पावर 1 and 2 पावर 2 4, 3 पावर 3 27, and AB not AP. This is not AP series. n factorial, let's say 0 factorial, 1 factorial is 1, and 2 factorial is 2, 3 factorial is 6, and so on. And prime आपको पता है, ये सारे सीरीज है. 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 and so on. And n cube, अब आपको पता है ये सारे not forms AP.
बात क्लियर? अगर आपको पता है एपी कौन है, नॉट एपी कौन है, ये जो सारे सीरीज से नॉट एपी, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि यार ए पावर एन स्क्वायर, लिखना भी जरूरत नहीं है, सीधा बताना ये नॉट रेगुलर है, क्यों, विच डजंट फॉर्म एपी। कितने एस है, वो एन स्क्वायर एस चाहिए आपको, और यहाँ 2 पावर एन एस चाहिए, 2 पावर एन एस चाहिए, दिस इज ऑल्सो नॉट रेगुलर। A power n factorial doesn't, right, do not form AP, so it is also not regular. And 100n, it's a multiplicity, right? 100 is the common distance for every two consecutive strings, so this is a regular. तो एग्जाम में अगर ओवर वन सिंबल आया और वो इन्फिनाइट लैंग्वेज है, सिर्फ आपको देखना है ये सीरीज क्या फॉर्म करेगा। बात क्लियर एवरीबॉडी? इफ द लैंग्वेज इज फॉर्मिंग द AP series and conditions, देखो you have to look at the condition. Language is having one symbol and it is infinite language. It is infinite language. Then you look at AP. If it is a finite language, don't look at anything. Simply say regular. Finite language is always regular. Finite language is always regular. अब देख लेते हैं finite language का। इसमें देखो कितने भी conditions हो, देखो a power prime is less than 100, 12, a power n, b power n, n less than 10 power 23 power 55, पर पूछना मत सर क्या है वैल्यू, मुझे भी नहीं पता यार। a power m, b power n such that m less than n less than, let's say 3, 14, w such that w belongs to a comma b whole star and length of w is less than 2, 200,000, मैं छोटा नंबर लिया है, but एग्जाम में you may have bigger constant also. ये सारे लैंग्वेजेस में क्या है कॉन्सेप्ट, जल्दी बताना यार। ये सारे लैंग्वेज, यार ये नहीं देखना सर कंपैरिजन है, ये नहीं देखना सर ये कैसे होगा डीएफए में, यार डीएफए इसको नहीं करेंगे, इससे हम पहले स्ट्रिंग्स फाइंड आउट करेंगे। वी विल फाइंड द स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स आर फाइनाइट, राइट, फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, वी कैन डिजाइन a DFA. 11 is non-regular. Who is that person? 11 is non-regular. Every finite language is regular. Remember, don't look at all these things, conditions. Note, every finite language is regular. Are they finite or not? Because every finite language will have a regular expression and finite automata, regular grammar also. Every finite language is regular over any sigma that you take. That is the reason all are regular. Now you may ask me, sir, why the 11 is regular? All are finite languages. You may ask me a small doubt, sir, show me that the a power prime says that prime less than 100 is regular. So I'll show you that. See, why I will not take less than 100. I will take something. What's happening? I'm sorry. It's going to do something here. Prime less than 100. 100, I don't take. I'll just take, let's say, 6. Very easy, right? Yeah, if I am able to prove the less than 6, you can prove less than 100, less than 1000, less than 1 lakh. So now, less than 6 means, what are they? A power 2, a power 3, a power 5. That's all. Now, for that, you need to design a DFA. Can you do? 1A, don't accept. 2A, yes, accept. 3A, yes, accept. 4A's, don't accept. 5A, accept. Over. Then, from here it's a missing, something is missing here. So on A, go to dead state. Over. This is the DFA for this. Now, if I'm able to do prime less than 6, you can do prime less than 1000, 1 lakh, anything. But don't leave that prime for infinite. If the prime goes till infinite, you cannot design a DFA. Keep on going, it never ends. Correct? Is it clear? If anybody looking at the DFA, do not look for the prime. It just looks for the strings. What strings need to be accepted? A power 2, a power 3, a power 5. We can design it. Clear? So you require to understand. आपको ये समझ में आना चाहिए इसे क्या strings आएगा. Right? इसे यार m less than n less than 3 DFA नहीं देखेगा.
इससे स्ट्रिंग्स आपको फाइंड आउट करना है, उसके लिए डिजाइन करना होता है, तो इसके अंतर देखना होता है, ये व्हाट आर स्ट्रिंग्स आर देयर। ऑल क्लियर? ग्रेट। तो ये देखो हर स्लाइड में एक एक कॉन्सेप्ट हो रहा है। एक स्लाइड में ओवर वन सिंबल बताया, एक स्लाइड में फाइनाइट लैंग्वेज कॉन्सेप्ट बताया, एक स्लाइड में तो जो सिंबल्स का डिपेंडेंसी है वो बताया। और अभी देख लेते कुछ नया पैटर्न। 15 ये बहुत फेमस पैटर्न है। ठीक, जल्दी चार्ट में आंसर कर दो। विच आर रेगुलर, विच आर नॉट रेगुलर? प्लीज कैन यू टेल मी विच आर रेगुलर, नॉट रेगुलर क्विकली? ग्रेट। यस, अगर फाइनाइट बेटा है तो रेगुलर है ना, डेफिनेशन ऑफ रेगुलर वही है। अगर आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा है वो रेगुलर है। वही डाउट क्यों पूछ रहा है यार? इफ यू हैव ए फाइनाइट बेटा इट इज रेगुलर, इफ यू हैव ए रेगुलर एक्सप्रेशन इट इज रेगुलर। वही तो है मीनिंग ऑफ रेगुलर, और डेफिनेशन को यही डाउट पूछ रहे हैं आप। व्हाट इज 14? 14 में क्या डाउट है यार? 14 just form it. What is the 14? 14 is length of the w less than 2. So put w is equal to epsilon, epsilon is epsilon. Put w is equal to one length. Your length of the string maximum 2 only, right? One length you can put AA or BB. So it means what? Epsilon is epsilon. Just 2 strings only, 3 strings only we have. It is also finite language now. You are not going for infinite because you have a restriction, length of the string less than 2. Even length of the string, this one cannot be 2 length. So 2 to 4 length also impossible. Worst case, you see, W you can put maximum 1 length. So 1 length you get just 2 length. So W is A, other W is also A. If the W is B, other W is also B. You cannot have even A, B, B, A here. So these are the only 3 strings that you get from this language. Is it clear? That is the reason it is also a finite language, hence regular. If you don't have this condition, definitely this is a not regular, correct? So just give a time to understand the concept. Like I have a 2 conditions, whatever I do, I need to follow these 2 conditions. Jaldi. Spend the time, because you know I'm writing a lot of languages here, so maybe it's not possibility time because you have a time after this class, right? So analyze each language, and in case you don't get it, you already have my Telegram group, Deva Sir PW. So just join here and ask the doubt. People will help you. If nobody helping, I am there to help you. Okay. So this is a Telegram group name. You can join anytime. Yeah, good morning, Abhishek Lakshmi. What are the regulars and non-regulars? Take just 1 minute or 2 minutes time more to analyze. In the exam, you don't have much time to think all of this. If they give you a new language, just think. Now you practice all these languages in the exam, just take seconds. Because you might have been practicing the same questions and might repeat in the exam also.
WW. See here, which of them are over one symbol? If you remember it, 15, 16, they are just over one symbol, but 17, 18 not over because ash is also there. For these two, sigma is what? For these two, sigma is A comma ash, because ash is also part of the string. But for this two, sigma is just A because ash is not there. So now here just use a AP formation. If they are going to form AP, they are regular. And how many of you know the put W is epsilon? What do you get? WW is epsilon. Put W is A, you get A square. Put W is equal to 2A, then 2A is A power 4. Then put W is 3A, 3A is A power 6. And what do you see here? It just even A's. Even A's already we just know it is regular. And see, how many of you know W and W power are exactly same over one symbol? How many of you know this point? If W is equal to triple A, do the reverse, you will get a triple A only. If you have two symbols, you cannot, have this, you cannot have the same sometimes. But when W is only over one symbol, the W power also will have the same. So there is no difference. This is just a 15 only. And both are in fact regular languages. Are you getting this point? And you always look at what is given. It's not just about WW. It's about what is W also. Here see, here also WW, but W is different. That means these languages are different. And this is regular, but this cannot be regular. Why? Because you will be seeing some kind of dependency between two W's, because there are two symbols can create a, complex sequence. Okay. Now, what about other one? This one, how many of you understood? It's just A power n, ash, A power n. Now you see before ash 100 is there, after ash also 100 is, because same W are writing. If it is not the W, if one is X, other is Y, then this could be in regular also. I'll show you that language also. Okay. Suppose if I write another language, 23, I'm explaining 23 now. Like instead of W ash W, I'll write something like this. W1 ash W2 and W1 comma W2 belongs to A star. Now I have no issue at all. This is going to be regular. Why? This means A star ash A star. Or before ash any number of A's, after ash any number of A's, I have no issue. But before ash, whatever is there, after ash also same thing is there, then I have a problem, because I don't know what is W, how long it comes, right? If I know how long it comes, I can decide. But W could be 1000 symbols. How could I remember? I require 1001 states. If W is 1 lakh symbols, I require 1 lakh 1 states. So W is going to be a very big problem for us. Okay, so this one 17 is not regular because of there is a dependency, and same problem. This is just 17 and both are not regular. So these two are not regular. Both are not regular, and these two are regular. Now this 23 is regular. Why? Because there is no such dependency. 17. Oh, do you want me to write everything? Okay. Ask when you really want everything, just let me know. 17, W ash W, where W belongs to A star. Okay, should I take another slide? That's good. It's also very important for the exam. That's why I'm taking your doubt. See, put a W. See, what can be W? W can be epsilon or A, or can be A square, or can be A power 3, can be A power 4. Using this, put in that. Put this here. What happens? You will get the language. When put epsilon, epsilon ash comes. Then put A there, A ash A. And put A square. If this is A square, that is also A square. Then A square ash A square. Just you need to give a time to understand. That's it. Right? Use the pen and paper when your brain is not thinking about it. It's just A power n ash A power n. Is it clear? Ash is another symbol. If they don't ask ash, they could ask something else. W, B, W, such that W belongs to A star.
Now it will be a power n, b a power n, and here sigma is a comma b. Instead of b they have given ash. They could ask anything. They could ask anything. Ash, don't confuse, it's another symbol in your language. Okay, one is different and this is different. One is a power n, b power n, and this one is a power n, b a power n. Both are different or not? Here the same symbol, depending again after some time, here different symbols are depending on each other, but dependency is there in both of them, right? Both are different problems, both are not regular, correct? Just write it and understand. A power n, b power n is a different language, but there also you have a dependency, but there dependency between two different symbols, here dependency between the same symbol, but in between b is there to differentiate. Anyhow, both are not regular, correct? Okay, done. One side is done, no doubt. This side. Now the problem here is, what is the problem with the 19? How many of you know all these are not regular? How many of you know from here to here all of them are not regular? The reason is, if the W, previously the W was, and two W's are representing A's, that's why converted into A power. All are A's, then you got a unique count. But now the W, suppose this W is A, B, 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 A, B, then other W also same thing. Then how can you guarantee that same A, B, 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 A, B is again coming? How can you do that? Even ash is there in between. Difficult to remember this thing because W is, don't know exactly which length is going to come in your string, correct? So the same W should come after ash because the states are not enough. W could be 100 length, W could be 1000 length, W could be 1 lakh length, W could be 1 million length. We don't know how long the W is going to come, and that W again need to be repeated after the ash. That is the problem happening here. That is the reason we don't know how to remember that long enough W to repeat again. But here we are not repeating it. The same thing converted into A power, and we can put a cycle to cover it. Because see, A power to A power 4, they're just two distance. We converted into AP series and we did it. But we cannot convert such things here, right? And all of them have some dependency between symbols. Clear this point? And you work on whatever you do it, it's impossible to design DFA or impossible to write expression. Done? It's a beginning, just beginning. And if you want to explain anything, let me know. I'll explain about it. $20 is not forming AP. Who is that? Anshugar. Did I say that word? Is it over one symbol? Sigma is here, two symbols. How do you say that? I did not use that word AP form for the 23. Just you are thinking yourself, don't do that. It's not over one symbol, yeah. It's about, it's A star, ash A star. It's over two symbols. When you have two symbols, don't think about the AP series. You just design, it's expression already. Just design. It's A star, non-final, ash A star. Now A star, put a final state and dead state. DFA want dead state. From here, here doesn't comes anything. Here ash comes again, go to dead state and put a comma ash. This is what your DFA looks like. Yeah, it's not about AP because here you have two symbols. I told you, I have given you, if the sigma has more than one symbol, do not worry about AP. Okay. Of course, sometimes required, but look at, do you really require that AP concept here? Right. For A, just, cycle required. For A, just, so both are individually require one length, but there is complete string is not, we are looking for AP. We are looking for DFA. Okay, done. 19 and 20. Have you understood 19 and 20, everybody? 19 and 20. 19 is WW. W belongs to A comma B whole star.
and 20 is W power R. What do you mean by this? Now you know W. What is W basically here? Oh, W can be epsilon, it can be A, it can be B, it can be AA, it can be AB, it can be BA, it can be what? BB, it can be AAA, it can be anything, right? It's anything. It's anything. Now take every W and put it, you will get some form. Put here epsilon, and put another one AA, then put another one BB. Then if you put W is AA, other W is also AA. Then AB, other is AB, BA, other is BA. If it is BB, other is BB, and keep on going it. What is reverse? The W power R means it's reverse here. What is its reverse? What is its reverse? What is W power R? Epsilon. What is A reverse? A. What is B reverse? B. What is AA reverse? AA. AB reverse is BA, and BA reverse is AB, and BB reverse is BB. AAA reverse is AAA. AAB reverse is BAA, and ABA reverse is ABA. So understand, just reverse of the W. And now if W is epsilon, other is epsilon. And if W is A, other is A. If W is B, other is B. If W is AA, other is AA. And if W is AB, now you look at W is AB. What is its reverse? BA. So now you see the difference. This is W, this is W power R. Now what is the problem in both of them? In both of them you see here should be same. That means this A should be same and this B should be same. This 2W should be maintained that dependency. Now here what is this two first and last should be same, and this form is there, right? The first and last should be same, and second last should be same, third and third last should be same. So this dependency cannot be done with the help of just states, and this dependency also cannot be done with the help of the states. Is it clear? Why we are not able to design a finite automaton? Because this kind of dependency cannot be understood through expressions or finite automata. That is why we don't have expression, we don't have finite automata for both of them, including other two problems 21, 22 also, right? But this problem, the W belongs to A star, we are not looking this dependency, we convert into A's only, everything is A, so A power, we maintain a cycle to do that. Done? That's why these all languages are not regular. Even you have the ash, still that will not help us, because before ash what is there, even after ash same thing is there, but what length is there, we don't have a memory to remember. Done? 22 problems. Okay. Maybe you have to take it as homework, because I need to cover other topic, the closure properties. So I'm giving you homework, I will give you answer. Only the thing is you need to understand and discuss. Whichever you don't get, you already have a group name, so come here and discuss with us. We will help you to understand each problem, right? Use this Telegram group to discuss with us if you have any answer. 24 WXW they are standard problems. In the exam you will see the same thing as it is mostly, because we have seen a lot of questions like this in previous years. They are repeating these things.
So keep this difference very, very important. What is the difference you see here? I'm keeping all of them together because you can remember at least if you don't understand. That is idea why I'm putting all this in one slide. Some people don't get the idea, how the language is formed. For them, at least they should remember. But I don't encourage to remember the problems. First understand, then remember it. So where is the change you see? Can you see here? This is a very important factor. This is the star. When this is a star, what happens? Here it is plus. That's the main difference you have here. That's all the difference. Can you see that? Here it is a plus, here it is a star. All these problems are star, all these problems are plus. In this especially here, this side there is no special. Do you know why? How many of you know all these are actually gives the same language when you write, when you put W and X, because W and X you can put anything, right? When you put W and X, all will give you the same language. They will give you simply A plus B whole star. Can you realize that? Put W is epsilon and X, you can put everything, anything. So you can do all of them A plus B whole star. You can get it. And all of them are in fact regular. What are they? All of them are regular, because you see that is a regular language. Yeah, here you don't have epsilon. Now you have a problem. When you don't have epsilon, you cannot hide the W. You cannot hide the W. So in this series, there's only the one very special problem. Remember, it is important. And this special language is a regular because this gives you some expression, because the X is there to pull both of them into non-dependency. So when you put a minimum W, this gives you a very unique form, and this is only the language which is regular, remaining all are not regular. And they do not have any kind of logic to create a finite or to write an expression, because dependency always exists. But this problem especially I will explain how this converts into a regular form, but all of them still dependency exists when this is not regular. Only the one which is 33. Why 33? The dependency is not there after putting W and X. So how can you understand these problems? Not by looking at. You need to put W and X and observe all the strings. Is there any regular form present in that or not? You should check. So now what I help you यहाँ पर क्या करना है आपको? W and X पुट करके देखना है, तभी समझ में आता ये क्यों रेगुलर हुआ है. तो इसके लिए मैं एक स्पेशल स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा WX W पावर R. तो ये याद रखना, बाकी सारे प्रॉब्लम्स में ये लॉजिक नहीं होता है. WX W पावर R, WX belongs to A comma B whole plus. See, now the problem is you need to put W and you need to put X. So you know what to put. What is the W? Epsilon, A, B, AA, AB, BA, BB, and so on. Right? I'll show you one thing. Sorry, epsilon you can't put. I'm very sorry because epsilon is not there. Now I'll show you one thing. I'll only put A and B. Now put whatever they are already covered it. Now X keep it because X is only once. Just keep it. Later you substitute. Now I'm putting only W. X keep it. X means what? A plus B whole plus. Write it otherwise. Equal to A. X means what? A plus B whole plus. Put everything. Because that's a free. But this you can't write A plus B whole plus because both are dependent. A reverse is A. And put a B. Put a B. B. X means A plus B whole plus. Put a B. And now whatever I am going to write, they're already covered by this. Just look at it. Carefully look at it. Double A. W is double A. And X means A plus B whole plus. And other reverse means double A. And this one is already covered or not? Yes. And put. So all of them are actually covered by this two. Now AB. Put AB. A plus B whole plus. Reverse is what? BA. BA. Now look at this.
starting is A, ending is A, and is this covering already this one? Yes. Now do whatever the remaining all are actually from here to this, all of them infinite tak. Oh, I'm sorry. From here, infinite tak, all of them are actually only covered by this 2. So you can write an answer. This is equal to AXA plus BXB is enough. Can you see that? That is the reason this language is regular. Even though epsilon is not there, but the form of the language is just depending on only 2 forms. Remaining all the forms, whatever the forms substituted by this, they are actually covered by with the two forms only. When you put a W is A, when you put W is B, just you got the answer A plus B whole plus A. You don't need to write all of them, just write these 2 forms, or this form B, A plus B whole plus B. These 2 forms are enough to answer the whole language. Is it clear? So this takes time. If you are looking at first time, it takes time. Starting and ending with the same symbol, but that's not enough. Minimum 3 length. Starting and ending with the same symbol, but that's not enough. That's a different problem. A plus B whole star A. This is a starting and ending with same symbols. A plus B whole star B plus A plus B. This is starting and ending with the same symbol. Both are different, right? So minimum 3 length should be another word you should add. If you say starting and ending with the same symbol, this is actual language, because single A is also starting and ending with the same symbol, B is also starting and ending with the same symbol. So actually between C, double A is not possible here. Double A, minimum one more length is there in between. So 3 length is. So how do you speak this language? Starting and ending with the same symbol, but the minimum length is 3. That is the name of the language. If you just speak off of the name, that's not enough. Okay, correct. Starting and ending with the same symbol, but minimum 3 length. That condition should be there. Okay, I hope with this you got an idea what are the languages are regular and what are the languages are non-regular. If you look at a lot of the gate questions, so many questions are covered so far, right? So practice these concepts and go for the gate PYQs. Even I have covered in the last year in PYQ series, and look at all the questions we discussed and understand why they are regular or non-regular. Any doubts so far? All good? Can we go for closure properties? One of the advantages, if anybody is already completed, not able to recall, this would be sufficient to do the revision. You don't need to do revision of all notes or entire video that you have already studied. Just revise the important concepts and go for the practice directly. That's why revision should save a lot of time. Don't revise everything that you have studied, because not possible. It takes a lot of time. Yeah, this class will be sufficient for solving PYQ. Remember that, because we are covering mostly all concepts. Yeah, Nageshwar. Yeah. This class notes and take the PYQs, and anything which misses PYQ will cover. That is one more advantage. Okay. Yeah. What is closure properties? Because closure properties basically talks about what? Group theory in discrete mathematics. Have you studied? If you have studied, what do you see in the group theory? There is a one domain, one operation. So is this operation closed or not? Will it satisfy associative, commutative, right? You speak like same kind of concept, closure properties. So we will have an operation, we will have a domain. So domain is here our regular languages.
or you can take other languages like non-regulars, finite, infinite. You can take any type of languages. So here two things. What is a closure property? Basically operation. Closure property need two things. One is domain, other is operation. Closure property is another name is operation. What is domain and what is operation? If you know both of them, you can talk about is it closed or not. There are two definitions are going to come. If you know domain and operation, if you miss any one of them, you lose the concept. Are you clear? When you are talking about closure properties, two things should be there. One, which languages you are applying. Other, what operation you are applying. Is it clear? You should know your domain, what languages you are looking at. Second, what operation you want to apply it. Suppose in mathematics, you have a natural numbers. That's your domain. Addition is operation. Am I looking for addition in natural set? Am I looking for the subtraction in natural set? Both are different. Or am I doing multiplication integer set? That's a different. So you should know where you are looking at and what operation applying. So two things. What's your domain and what's your operation? Is it clear? So if you lose any of these two, and this topic really complicated for you, because I saw a lot of the students, they miss it. They don't know what domain they are looking at. They don't know what operation. Mostly the people look at operation name, they forgot the domain, because they said apply for regulars, they apply for non-regulars. Wrong, because they are very clearly saying that apply for regular languages, you should apply for regular languages only, but the result may be anything that you have to look at. Okay, let's start. Closure properties. Okay, there are various closure properties that you can look at it, but I am going to cover very important for the exam. Remaining you can worry about, but those things which are asked so far in the exam, I am writing it. It just assume revision who are studied or who are not studied, this would be sufficient for the exam. So that is how I am going to take it. Union. It's an operation name, remember, not a domain name. So where do you apply? Will apply for finite languages, for infinite, for regular, for non-regular, something like that. 2. Intersection. 3. First we'll work on these three only. We'll get a much idea about it. Okay, first we'll work on these three operations. Okay, but not 1, 2, 3. It's going to be very good revision for you. These operations I'm going to apply for various domains. First I will apply for one domain, then we'll work for other. Okay, let's take this slide for how many times? 4 times I'll take. Okay, four domains I'm going to apply. Now if I say apply for finite languages, okay, we'll see how do you understand. What is the meaning of this? Anybody knows? Is it closed or not? Only two words we have. One is closed, other one is not closed. How many of you know the definition of closed, not closed? Please, if you know it, please put in the chat. I'll just revise it, or I'll just look at it to explain. Okay, what is closed? When we say particular operation is closed for the particular domain. Suppose let's talk about union. Union is the closed for finite languages. Those people who have studied answer it, who are not studied I'm going to explain. What is the definition of closed? Okay, good. Mathematics is easy to explain. See, n is the natural set and plus is the addition.
and n is the natural set, minus is the operation. So here we have two things. This is a domain, this is operation. Is it closed or not? Just tell me what is it. Is dash closed or not closed? This domain and operation is closed or not closed? Easily you can remember with the help of these 2 points. It's not about any operation. Operation is fixed. Do the addition for every 2 elements of natural, you will get back to natural. See, take any 2 natural number or every 2 natural numbers, apply the plus, the result inside the n always. The definition of like this, definition is like this. For all elements e1, e2 belongs to n, take this 2 and apply which operation? Plus e1 plus e2 is always belongs to n, always. That means take the 2 elements from the given domain and apply the operation, the result is always in the same set. आपको ये समझ में आना चाहिए, इसमें से 2 elements को पकड़ना और ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद रिजल्ट इसी के अंदर होगा, तभी उसको बोलते हैं हम क्लोज्ड. इज दैट क्लियर बात? Have you understood? You have to take the elements from the given domain only. Given, don't go outside the naturals. अगर मैं रेगुलर लैंग्वेज के लिए बात कर रहा हूं, यू हैव टू पिक रेगुलर ओनली, बट रिजल्ट क्या होगा देखना है. हमेशा रेगुलर है तो क्लोज्ड, यार कभी कभी रेगुलर नहीं आ रहा है तो नॉट क्लोज्ड. और यहां क्या होता है, यहां यार रिजल्ट देखना होता है. यार ऐसे कोई एग्जाम्पल है क्या? एवरी को जरूरत नहीं यहां पर, देयर एग्जिस्ट, मतलब ऐसे कोई एग्जाम्पल है क्या? वो E1 एंड E2 है, वो n के अंदर है, n से बाहर नहीं, n के अंदर है, बट रिजल्ट वो होगा बाहर. ऐसे कोई एग्जाम्पल है क्या? है. क्या है? लेट्स टेक 1 एंड 2. 1 minus 2 इज अ -1. -1 अंदर नहीं रहता, तो ऐसे कोई एग्जाम्पल है क्या? इसलिए इसको बोलते हैं हम नॉट क्लोज्ड. नॉट क्लोज्ड के लिए एग्जाम्पल चाहिए होता, क्लोज्ड के लिए आपको प्रूफ और एल्गोरिथम और डेफिनेशन को समझना होता है. एवरीबॉडी, ये प्रूफ बाय एग्जाम्पल से पकड़ सकते, ये प्रूफ बाय एल्गोरिथम चाहिए होता है इसको प्रूव करने के लिए. डन? क्यों? एवरी 2 एलिमेंट्स के लिए एग्जाम्पल एनफ नहीं है. एवरी 2 इनफिनिट एलिमेंट्स है इसके अंदर, तो आप इनफिनिट को नहीं देख सकते ना, तो एल्गोरिथम चाहिए होता है. ये क्यों? हमेशा नेचुरल नंबर आएगा रिजल्ट. डेफिनेशन क्लियर? जो पहली बार पढ़ रहा है, क्लोज्ड मतलब अंदर से पिक करना, रिजल्ट भी अंदर ही रहेगा. अंदर मतलब इस n के अंदर, n के अंदर से पिक करो इनपुट, ये इनपुट मानना, ये आउटपुट मानना, a1 प्लस इनपुट अंदर से पिक करो, आउटपुट भी अंदर है. इनपुट अंदर से पिक करो बट आउटपुट कभी कभी अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए ये नॉट क्लोज्ड है. नॉट क्लोज मतलब कभी कभी बाहर जा रहा है, कभी कभी आउटपुट जो रिजल्ट है वो डोमेन के अंदर नहीं है. हमेशा डोमेन के अंदर आ रहा है आउटपुट, क्लोज्ड. एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल है वो डोमेन के अंदर नहीं आ रहा है आउटपुट रिजल्ट, दैट्स नॉट क्लोज्ड. एवरीबॉडी, क्यों? ये मैथमेटिक्स से बहुत जल्दी समझ में आता है इसलिए ये एग्जाम्पल दिया है, बट हम ये जो प्रॉपर्टी डेफिनेशन है तो इस डोमेन के लिए अप्लाई करना है. अभी नेचुरल सेट नहीं दिया है. क्या दिया है? फॉर फाइनाइट लैंग्वेजेस. ऑल द फाइनाइट लैंग्वेजेस लेना होता दुनिया में, इसके लिए सिग्मा फिक्स कर लो. सिग्मा क्या है पहले? तो फॉर फाइनाइट लैंग्वेजेस अप्लाई करना है. कितने फाइनाइट लैंग्वेजेस दुनिया में? इनफिनिट फाइनाइट लैंग्वेजेस, आपको पता है. अब यूनियन अप्लाई करो. फाइनाइट लैंग्वेज यूनियन फाइनाइट लैंग्वेज. हमेशा फाइनाइट आएगा नहीं आएगा बताना? 2 लैंग्वेजेस है, 2 फाइनाइट लैंग्वेजेस है, यूनियन अप्लाई करो, रिजल्ट ये एडिशन नहीं कर रहा है, हम यूनियन कर रहा है. अब बताना यूनियन क्लोज्ड है नॉट क्लोज्ड है? हम सिर्फ एक वर्ड लिख सकते, इसका मीनिंग बताते. क्लोज्ड, इंटरसेक्शन, क्लोज्ड, कॉम्प्लीमेंट, नॉट क्लोज्ड. राइट? ये कैसे पता है क्लोज्ड? बिकॉज फाइनाइट लैंग्वेज यूनियन फाइनाइट लैंग्वेज हमेशा फाइनाइट होता है, तो इसलिए क्लोज लिखा है. तो यूनियन ऑपरेशन इज क्लोज्ड फॉर फाइनाइट लैंग्वेजेस. पढ़ना भी ऐसे पढ़ना, यूनियन इज क्लोज्ड फॉर फाइनाइट लैंग्वेजेस. फाइनाइट लैंग्वेजेस के लिए यूनियन ऑपरेशन हमेशा क्लोज्ड है. क्यों? रिजल्ट हमेशा फाइनाइट आता है. और इंटरसेक्शन ऑफ 2 फाइनाइट लैंग्वेजेस, फाइनाइट इंटरसेक्शन फाइनाइट, हमेशा फाइनाइट है.
और कॉम्प्लीमेंट, बताना कॉम्प्लीमेंट। कितने लोग को पता फाइनेट लैंग्वेज को कॉम्प्लीमेंट किया है? मान लो सिग्मा, सिग्मा को फिक्स कर लेते पहले, ए कामा बी। इसके लिए कोई भी फाइनेट लैंग्वेज, कितने फाइनेट लैंग्वेजेस है दुनिया में? फाइनेट लैंग्वेजेस कितना है? F1 मान लो ये एम्प्टी सेट, ये F2 मान लो ये एप्सिलॉन, F3 ये है, F4 B है। ऐसे कितने लैंग्वेजेस है दुनिया में? ए कामा एप्सिलॉन यार, और लेंगे यार, ए पावर एन, बी पावर एन, एन लेस देन 10, ये भी फाइनेट लैंग्वेज है ना। F7 ए पावर प्राइम, प्राइम लेस देन 1000 और 100 और 50, ये सारे फाइनेट लैंग्वेजेस तो है ना। ऐसे कितने फाइनेट लैंग्वेजेस है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ फाइनेट लैंग्वेजेस है। अब किसी फाइनेट लैंग्वेज को लेके कॉम्प्लीमेंट करो। कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन कितने लोग को पता? लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है सिग्मा स्टार से इस एल को हटाना होता है, डेफिनेशन ये सबको पता है। अगर मैं वहां पर कोई भी फाइनेट लैंग्वेज को लेके, फाइनेट मान लो एल इज फाइनेट लैंग्वेज, इसको ले लेते, ये एप्सिलॉन, ये फाइनेट लैंग्वेज है ना, ये फाइनेट लैंग्वेज है ना, इसको कॉम्प्लीमेंट करो, क्या आएगा रिजल्ट? और a प्लस बी होल स्टार से हम एप्सिलॉन को हटाएंगे, रिजल्ट क्या आएगा? a प्लस बी होल प्लस आया। तो क्यों आया बताना जल्दी। ये एक्चुअली a प्लस बी होल स्टार है, इनफाइनाइट लैंग्वेज है। इनफाइनाइट से कितने भी फाइनाइट हटाना तो हमेशा इनफाइनाइट ही बचेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अगर l, इफ l इज अ फाइनाइट, हमेशा होता है L कॉम्प्लीमेंट इज इनफाइनाइट लैंग्वेज। ये बात समझ में आया? क्यों सिग्मा स्टार क्या है? इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट से फाइनाइट हटाना हमेशा इनफाइनाइट ही बचेगा। तो L कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? आंसर फाइनाइट लैंग्वेज, फाइनाइट लैंग्वेज को कॉम्प्लीमेंट करना तो सिग्मा स्टार माइनस फाइनाइट, एंड सिग्मा स्टार ये तो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट माइनस फाइनाइट हमेशा इनफाइनाइट ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फाइनाइट लैंग्वेज। हमको तो क्या है, एक एग्जांपल चाहिए यार, ये एक नहीं, एवरी फाइनाइट लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट इनफाइनाइट आ रहा है, हमको ये चाहिए नहीं था डेफिनेशन में, हमको डेफिनेशन में चाहिए था एक एग्जांपल। ये तो हर एग्जांपल, मतलब ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, राइट? इसमें सिर्फ एक एग्जाम्पल चाहिए, आप किसी को भी पकड़ना वो एग्जाम्पल हो जाएगा। इसको पकड़ना, इसके कॉम्प्लीमेंट सिग्मा स्टार होता है, वो बाहर होता है। ये तो फाइनाइट लैंग्वेजेस है, डोमेन के बाहर इनफाइनाइट है, तो इसको पकड़ना, इसकी कॉम्प्लीमेंट भी बाहर जा रहा है। हमको सिर्फ एक एग्जाम्पल चाहिए था प्रूव करने के लिए, तो किसी को भी पकड़ना वो एग्जाम्पल है। बात क्लियर? सिर्फ वन एग्जाम्पल चाहिए था प्रूव करने के लिए। दुनिया में कोई भी फाइनाइट लेना वो आपके लिए प्रूव होगा नॉट क्लोज बताने के लिए। क्यों? एवरी फाइनाइट लैंग्वेज का, या मैथमेटिक्स में फाइनाइट सेट अलग है, ठीक है? हमारा जो यूनिवर्सल लैंग्वेज इज इनफाइनाइट, इसलिए आपको मिल रहा है इनफाइनाइट माइनस फाइनाइट, इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइनाइट लैंग्वेज ओवर एनी सिग्मा इज डैश। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ये एग्जाम में डायरेक्टली भी हो सकता क्वेश्चन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सेट और फाइनाइट लैंग्वेज ओवर एनी सिग्मा इज डैश। क्या आना चाहिए आंसर? ये सम कॉम्प्लीमेंट नहीं है, एवरी लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट, एवरी फाइनाइट लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट, एक ही आंसर आएगा, वो इनफाइनाइट लैंग्वेज होगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बट नॉट क्लोज का डेफिनेशन अलग है और या ऑपरेशन डिफरेंट है। हमको सिर्फ सम लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट इनफाइनाइट चाहिए, ये तो एवरी कॉम्प्लीमेंट इनफाइनाइट ही आ रहा है। बात क्लियर? चलो अब इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर दो फटाफट। बात समझ में आया? तो ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए आपको फॉर इनफाइनाइट लैंग्वेजेस के लिए अप्लाई करना। तो कैसे अप्लाई करोगे? लिखो एक बार, इनफाइनाइट यूनियन इनफाइनाइट। मैं यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बाद में आंसर बताना। इनफाइनाइट यूनियन इनफाइनाइट लैंग्वेज, रिजल्ट क्या आएगा वो देखना, इसके बाद आंसर बताना क्लोज्ड है नॉट क्लोज्ड है। इनफाइनाइट इंटरसेक्शन इनफाइनाइट, हमेशा इनफाइनाइट आया तो तभी क्लोज्ड हो। इनफाइनाइट लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट, आंसर क्या होगा?
आंसर भी बताना। दो चीज यहां पर अभी, क्लोज नॉट क्लोज अलग कॉलम है और ऑपरेशन भी अलग कॉलम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए दो कॉलम लिख रहा हूं। तो क्लोज नॉट क्लोज का लिख देता हूं पहले। मान लो ये जो स्लाइड है इंपॉर्टेंट आपके लिए, कि यहां पर बहुत लोग गलत करता है, इसलिए ये इसको नोट मार के बार बार देख लेना इसका, क्यों इसमें जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो जल्दी समझ नहीं आता। लाइक इंटरसेक्शन ऑफ टू इनफाइनाइट लैंग्वेजेस, कुछ भी बोल देते लोग बिना समझ के। ये जो आंसर है यूनियन इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए क्लोज्ड है। क्यों क्लोज्ड है यार? इस दोनों इनफाइनाइट, इन जनरल बता रहा हूं, ये दोनों में एक भी इनफाइनाइट रिजल्ट इनफाइनाइट होता है। अभी दो इनफाइनाइट लैंग्वेजेस है तो रिजल्ट इनफाइनाइट ही होगा ना, यूनियन कर रहे हैं हम, अटा नहीं, राइट। बट इनफाइनाइट इंटरसेक्शन इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता, इसलिए नॉट क्लोज्ड है। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनफाइनाइट रिजल्ट क्या होगा मुझे बताना, ये भी नॉट क्लोज्ड है। मुझे ए आंसर चाहिए था, ये तो ठीक है, अब ये रिजल्ट चाहिए मुझे। इनफाइनाइट यूनियन इनफाइनाइट, ऑलवेज इनफाइनाइट, इसलिए क्लोज्ड बताया मैं। ऑलवेज इनफाइनाइट, समटाइम्स नहीं, ऑलवेज। अब बताना इनफाइनाइट इंटरसेक्शन इनफाइनाइट क्या लिखना है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इनफाइनाइट इंटरसेक्शन इनफाइनाइट? इज इट इनफाइनाइट, इज इट फाइनाइट, इज इट समटाइम्स इनफाइनाइट, समटाइम्स नॉट इनफाइनाइट? ये आंसर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड एग्जांपल एंड थर्ड भी ऑफ कोर्स। I'm waiting for your answer, guys. This type of questions बहुत लोग कर सकते, बट ये करने से पहले क्लोज नॉट क्लोज का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए यार। इनफाइनाइट इंटरसेक्शन इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता, फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। किसी को पता है क्या क्यों फाइनाइट और इनफाइनाइट? मे और मे नॉट बी, राइट। क्यों दुनिया में ऐसे इनफाइनाइट इन टू लैंग्वेजेस लिया है, रिजल्ट क्या होगा? वाइड इनफाइनाइट लैंग्वेजेस लेना है, फाइनाइट पिक नहीं करना है। डोमेन इनफाइनाइट लैंग्वेजेस, डोमेन के अंदर इनफाइनाइट लैंग्वेजेस है, हम इनफाइनाइट ही पिक करना है। रिजल्ट क्या आ रहा है देखना होता है। आपको क्या पिक करना है वो फिक्स है। मैं वेट कर रहा हूं आप लोग का आंसर, एग्जाम्पल तो देने वाला हूं, मैं वेट कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट तो बताया तो प्रूव नहीं करूंगा। देखो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन इनफाइनाइट क्या है? इनफाइनाइट इंटरसेक्शन इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, राइट। इज आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट बताया मैं, आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसके लिए दो एग्जाम्पल चाहिए होता हमको। केस वन, सपोज मैं ए स्टार लिया है, इंटरसेक्शन बी स्टार लिया है, रिजल्ट क्या आया? ओनली एप्सिलॉन आएगा, क्यों दोनों में एप्सिलॉन कॉमन है। ए स्टार में एप्सिलॉन है, बी स्टार में एप्सिलॉन है, वही कॉमन है, बाकी सारे कॉमन नहीं है, तो ये फाइनाइट है। अरे इनफाइनाइट चाहिए यार, वही लैंग्वेज को दोबारा लेना, क्या होता है? दूसरा एग्जाम्पल क्यों लेना है, वही एग्जाम्पल लेना। ए स्टार ये इनफाइनाइट है, बात क्लियर। दो इनफाइनाइट लैंग्वेज लिया है यार, सेम लेना अलग लेना आपका इच्छा है, बट दो पॉसिबिलिटीज तो है। ए स्टार बी स्टार का कॉमन लेना, सिर्फ एप्सिलॉन दिखता है तो ये फाइनाइट लैंग्वेज है। ये डोमेन के अंदर नहीं है, डोमेन से बाहर है। डोमेन के अंदर सिर्फ इनफाइनाइट है, क्यों डोमेन का नाम बताया आपको, सिर्फ आपको डोमेन देखना है इनफाइनाइट लैंग्वेजेस। ये इनफाइनाइट नहीं आ रहा है यार, दो इनफाइनाइट तो पिक किया है, रिजल्ट डोमेन के अंदर नहीं है, फाइनाइट गया है, वो फाइनाइट लैंग्वेज बाहर है, फाइनाइट लैंग्वेज बाहर है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग विद ए कुछ भी ले सकते हैं, स्टार्टिंग विद बी, बहुत सारे एग्जांपल्स यार, इनफाइनाइट एग्जांपल्स है इसको प्रूव करने के लिए। मैं दो एग्जांपल्स ऐसे एग्जांपल दिया तो आप याद रख सकते हैं इजीली, यू कैन इजीली रिमेंबर राइट दिस एग्जांपल्स। स्टार्टिंग विद ए स्टार्टिंग विद बी लेना, स्टार्टिंग विद ए में स्टार्टिंग विद बी में कोई कॉमन स्ट्रिंग नहीं होता, एम्प्टी लैंग्वेज आएगा, एम्प्टी लैंग्वेज तो फाइनाइट है, एम्प्टी लैंग्वेज इसके अंदर नहीं होता, सिर्फ इनफाइनाइट लैंग्वेजेस को देख रहा है, रिजल्ट इनफाइनाइट होगा। देखो यूनियन
यूनियन देखो, इन्फिनाइट यूनियन इन्फिनाइट हमेशा इन्फिनाइट है, तो इस डोमेन के अंदर होगा। डन। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ इन्फिनाइट लैंग्वेज भी आइदर फाइनाइट और इन्फिनाइट होगा। ये कितने लोग को समझ में आया? डन। सिमिलरली इसके लिए भी देखना, इनफाइनाइट लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट देखो, ए स्टार ही लेना, ए स्टार का कॉम्प्लीमेंट वो भी इन्फिनाइट है, एंड फाइनाइट चाहिए तो सिग्मा स्टार को लेना, कॉम्प्लीमेंट पाई होता है। अरे क्लोज तो लिखा है ना, अरे इन्फिनाइट यूनियन इन्फिनाइट यार, हमेशा इन्फिनाइट होता है ना। इसमें इन्फिनाइट पिक कर लो, स्ट्रिंग्स इन्फिनाइट लैंग्वेज है, इसमें इन्फिनाइट, ए भी इन्फिनाइट है, इसमें भी इन्फिनाइट स्ट्रिंग्स है, दोनों यूनियन करने के बाद इन्फिनाइट तो आना चाहिए ना। अरे सिर्फ डेफिनेशन दिमाग भी अप्लाई किया समझ में आता, यूनियन करना है, इन्फिनाइट स्ट्रिंग्स है, इसमें इन्फिनाइट स्ट्रिंग्स है, दोनों यूनियन करने के बाद तो इन्फिनाइट आएगा ना। इंटरसेक्शन में दिक्कत है क्यों, कॉमन कितने होंगे यार, कॉमन इन्फिनाइट होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होगा, इसमें दिक्कत है यार। यूनियन में क्या दिक्कत है यार, कॉम्प्लीमेंट यार, कॉम्प्लीमेंट तो इजी है, स्टार्टिंग विथ लेना, बहुत बहुत इजी होता है। अगर एल इज इक्वल स्टार्टिंग विथ ये लेना, ये इन्फिनाइट है फाइनाइट है, आपको सिर्फ इन्फिनाइट ही लेना है। अब प्रूव करना है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग विथ बी होता है एंड एप्सिलॉन भी होता है इसके अंदर, ये भी इन्फिनाइट है। देखो इन्फिनाइट का कॉम्प्लीमेंट इन्फिनाइट है, केस वन इन्फिनाइट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, इन्फिनाइट। और सेकंड केस टू, एल इज इक्वल ए प्लस बी होल प्लस लेंगे इजी के लिए, स्टार भी ले सकते कोई दिक्कत नहीं, ये भी इन्फिनाइट है, बट इसकी कॉम्प्लीमेंट देखो, एल कॉम्प्लीमेंट देखो सिर्फ एप्सिलॉन होगा। ये क्या है, ये फाइनाइट लैंग्वेज है। देखो इन्फिनाइट लैंग्वेज तो ले रहा हूं, कभी कभी इन्फिनाइट कभी कभी फाइनाइट, इसलिए इन्फिनाइट लैंग्वेज को अगर कॉम्प्लीमेंट किया कुछ भी हो सकता, कभी कभी फाइनाइट कभी कभी इन्फिनाइट। बात क्लियर? यूनियन के लिए कोई एग्जांपल की जरूरत नहीं, दुनिया में कोई भी एग्जांपल लेना, रिजल्ट इन्फिनाइट होता है। डन। एनी डाउट? ऑल क्लियर? चलो अब आपको बताना है क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस। ओके, ये एक्चुअल टॉपिक है, डायरेक्टली बताना मुश्किल है, समझना भी मुश्किल है, तो अब इजी होता है हमको। दो रेगुलर लैंग्वेजेस लेना है, यूनियन अप्लाई करना है। रेगुलर लैंग्वेज के लिए एक एडवांटेज है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज क्लोज्ड है, बहुत सारे, एक दो नहीं बहुत सारे प्रूफ्स है इसके लिए। सारे क्लोज्ड है, सबके लिए प्रूफ होता है यहां पर। कुछ प्रूफ्स पता है तो अच्छा है, नहीं पता है तो भी चलेगा एग्जाम के लिए, बट एमटेक में चाहिए होता प्रूफ्स, क्यों, वहाँ असाइनमेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम क्वेश्चन है, प्रूफ पूछेंगे। बीटेक में प्रूफ्स जरूरत नहीं है मोस्टली, गेट एग्जाम के लिए तो बिल्कुल जरूरत नहीं प्रूफ्स। इसका मतलब क्या है, यूनियन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेस हमेशा क्या होता है, इसको देखने के बाद आपको लिखना होता है, इफ L1 and L2 are regular languages, then एग्जाम में ये क्वेश्चन में क्या आंसर दोगे, इज L1 इंटरसेक्शन L2 इज, और L1 कॉम्प्लीमेंट, L2 कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा क्या होता है, ऑलवेज रेगुलर, ए बी ऑलवेज रेगुलर।
ठीक है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए प्रूफ ऑलरेडी है, कॉम्प्लीमेंट करना है। देखो L1 के लिए DFA डिजाइन करके फाइनल नॉन फाइनल इंटरचेंज करो तो कॉम्प्लीमेंट मशीन मिलेगा, DFA मिलेगा, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, वो रेगुलर है। क्योंकि L के लिए DFA है तो L कॉम्प्लीमेंट के लिए भी DFA। ये बहुत इजी प्रूफ है। यूनियन के लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन लेके दो रेगुलर एक्सप्रेशन को लेना, बीच में प्लस लगाना, तो रिजल्ट आपको यूनियन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेस मिलेगा। तो इंटरसेक्शन के लिए एक एल्गोरिथम है, कंपोजिशन है। अगर टू फाइनाइट ऑटोमेटा है तो एक एल्गोरिथम है कंपोजिशन एल्गोरिथम। दो मशीन्स को आप कंबाइन कर सकते हैं यूजिंग कंपोजिशन एल्गोरिथम, है ना। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रूफ्स है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, बट आई एम इग्नोरिंग इट, एग्जाम के लिए इतना जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस फॉर नॉन रेगुलर लैंग्वेज, कितने लोग को पता है नॉन रेगुलर्स? अभी तो देखा है ना, A⁴n B⁴n W ओवर सिग्मा इज इक्वल A, B, नॉन रेगुलर्स। अगर दो नॉन रेगुलर लिया, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और पता नहीं, देख के तो नहीं बता सकते, ऐसे देख के नहीं बता सकते, एग्जाम्पल कुछ ट्राई करना होता है, पहले पता करना होता है नॉन रेगुलर्स क्या क्या है, देन कोशिश करना यूनियन कुछ भी हो सकता है क्या। दो नॉन रेगुलर को लिया है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता। दो नॉन रेगुलर को लिया है तो रिजल्ट इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन रेगुलर्स, रेगुलर भी हो सकता। कॉम्प्लीमेंट ऑफ नॉन रेगुलर हमेशा नॉन रेगुलर ही होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है। यूनियन ऑफ टू नॉन रेगुलर्स रेगुलर भी हो सकता है। इसको समझने के लिए एक एक स्लाइड ले रहा हूं मैं। नॉन रेगुलर लैंग्वेज यूनियन नॉन रेगुलर लैंग्वेज, रिजल्ट क्या होगा? आप सोच रहा होगा नॉन रेगुलर ना, इधर रेगुलर और नॉट रेगुलर होगा। तो क्यों होगा? तो एग्जांपल चाहिए होता, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। नॉन रेगुलर यूनियन नॉन रेगुलर, देखो A⁴n B⁴n, ये नॉन रेगुलर है, रेगुलर है, नॉन रेगुलर। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बेसिकली वो भी नॉन रेगुलर है, उसका कॉम्प्लीमेंट ही ले रहा हूं मैं। कितने लोग को पता दुनिया में L यूनियन L कॉम्प्लीमेंट हमेशा सिग्मा स्टार होता है। L जो भी लैंग्वेज है, रेगुलर हो नॉन रेगुलर कोई दिक्कत नहीं, L यूनियन L कॉम्प्लीमेंट हमेशा सिग्मा स्टार होता है। ये सिग्मा स्टार रेगुलर होता है ना। L नॉन रेगुलर हो फिर भी रिजल्ट रेगुलर होता है यहां पर। तो ये रिजल्ट जो है सिग्मा स्टार है, वो A+B होल स्टार होता है। A+B होल स्टार में जो स्ट्रिंग्स इसमें नहीं है उसमें होगा, जो स्ट्रिंग्स इसमें नहीं है इसमें होगा। तो ये बहुत खतरनाक एग्जाम्पल है ना। और सेकंड यार, नॉन रेगुलर इन्हें नॉन रेगुलर प्रूव करना है, बहुत इजी है। A⁴n B⁴n, यहां भी A⁴n B⁴n ही लेना, यहां भी वही लेना, दूसरा क्यों लेना है? वही रिजल्ट आएगा। देखो कभी कभी रेगुलर आएगा, कभी कभी नॉट रेगुलर आएगा, तो इसका मतलब रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। डन। तो इसलिए जो रिजल्ट है नॉट क्लोज्ड, ऐसे हमको याद नहीं रख सकते यार नॉन रेगुलर यूनियन नॉन रेगुलर इज नॉन रेगुलर, क्यों है? नहीं, गलत है वो स्टेटमेंट। नॉन रेगुलर यूनियन नॉन रेगुलर कुछ भी होगा, आइदर रेगुलर होगा नॉन रेगुलर होगा। जब समझ में आएगा नॉन रेगुलर तभी ये आंसर मिलेगा आपको, डायरेक्टली नहीं बोल सकते यार बिना समझ के। तो टीओसी में यही दिक्कत है, दिमाग को बहुत ज्यादा अप्लाई करना है बिना दिमाग से, मतलब अगर आप सोचे नहीं तो आंसर मैं भी गलत बोल सकता हूँ यार। कभी कभी ऐसे होता है यार, मैं इधर उधर देख के यार स्टेटमेंट बोल देता हूँ, गलत होता है कभी कभी। क्यों है? सोचना पड़ता, हर स्टेटमेंट हर बात को सोचना होता। क्यों? थियरी ऑफ कंप्यूटेशन, हर बात में कंप्यूटेशन होता है, हर बात में मीनिंग होता है। तो एवरी वर्ड इंपॉर्टेंट, एवरी सिंबल इंपॉर्टेंट, इसलिए टीओसी पढ़ना बहुत ऐसे पेशेंस चाहिए होता। अगर टीओसी को पढ़ लिया तो गेट इजी होता आपको। इसलिए बहुत लोग, इवन रैंकर्स को भी पूछना, कभी कभी बोलते हैं यार टीओसी बहुत इजी है, कुछ लोग बोलते हैं टीओसी यार मेरे से नहीं हो पाता। क्यों है? वो हर बात को सोचना होता है ना। फर्स्ट डेफिनेशन, देन एग्जांपल्स, देन प्रैक्टिस।
इस सीक्वेंस को फॉलो किया। देखो कोई भी पढ़ा रहा हूं मैं, पहले डेफिनेशन भी बता रहा हूं, एग्जाम्पल भी बता रहा हूं, और उसको समझने के लिए प्रैक्टिस भी बता रहा हूं, राइट। स्टेटमेंट ऐसे देके नहीं छोड़ रहा हूं, इसको समझने के लिए कोई भी डाउट पूछता है उनकी एग्जाम्पल भी दे रहा हूं, राइट। तो आपको भी यही फॉलो करना है। अगर कोई स्टेटमेंट समझ नहीं आया तो इसके लिए क्या है रीजन, पकड़ लो, काम खत्म। अगर समझ में आया तो रीजन जरूरत नहीं है। अब ये हो गया इंटरसेक्शन। क्या है इंटरसेक्शन? आपको यार प्रॉब्लम है a पावर n b पावर n है, इसी को इंटरसेक्शन लिया, रिजल्ट वही आएगा। तो नॉन रेगुलर प्रूव करना कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम है रेगुलर प्रूव करना। तो a पावर n b पावर n है, इंटरसेक्शन विथ b पावर n a पावर n। क्यों? दोनों नॉन रेगुलर ही लेना है, तो इसमें रेगुलर नहीं लेना है, ये भी नॉन रेगुलर ये भी नॉन रेगुलर। इंटरसेक्शन देखो सिर्फ एप्सिलॉन होता है कॉमन, मतलब देखा यहां एप्सिलॉन ही कॉमन है, बाकी सारे स्ट्रिंग्स बिल्कुल अलग होता है। यहाँ ए भी होता है, यहाँ बी ए होता है, यहाँ डबल बी ट्रिपल बी ये होता है सीक्वेंस, यहाँ बी के बाद ए है, राइट। तो ये इसमें सिर्फ एप्सिलॉन कॉमन है। तो ये रेगुलर है नॉन रेगुलर है, तो रिजल्ट इसलिए कभी कभी रेगुलर कभी कभी नॉट रेगुलर है, इसलिए नॉट क्लोज्ड। बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नॉन रेगुलर क्यों नॉन रेगुलर होता है, कितने लोग को पता है? अगर नॉन रेगुलर लैंग्वेज लिया है, नॉन रेगुलर लैंग्वेज लिया है, इसको कॉम्प्लीमेंट किया है, तो रिजल्ट हमेशा नॉन रेगुलर क्यों होता है? एनीबॉडी? इसके आंसर यहीं पर है, रेगुलर कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज रेगुलर। यहीं पर आंसर है उनके आंसर। इफ यू नो दिस आंसर दैट विल बी इजी। तो इसको प्रूव कर लेते पहले। देखो अगर कोई भी लैंग्वेज रेगुलर है, हमको क्या प्रूव करना है? यल कॉम्प्लीमेंट क्या करना है? इज ऑल्सो रेगुलर, ये प्रूव करना है ना, इज ऑल्सो रेगुलर। इसको प्रूव करने के लिए एक एल्गोरिथम है। अगर ये रेगुलर है, इनके लिए डीएफए होता नहीं होता? यल हैज ए डीएफए लेट्स से डी। तो आपको क्या करना है, इसी डी को लेके थोड़ा फाइनल्स को नॉन फाइनल्स को इंटरचेंज करो, फाइनल को नॉन फाइनल बनाना, नॉन फाइनल को फाइनल बनाना। तो अब एक डीएफए आएगा, ए न्यू डीएफए आएगा, राइट। डीएफए दैट एक्सेप्ट्स एग्जैक्टली एल कॉम्प्लीमेंट। जो डीएफए आया ना, डी डैश मान लो, वो डी डैश एग्जैक्टली एक्सेप्ट्स एल कॉम्प्लीमेंट। ये एल्गोरिथम है। अगर एल के लिए डीएफए है, एल कॉम्प्लीमेंट के लिए डीएफए होता है, तो इसलिए एल रेगुलर है, एल कॉम्प्लीमेंट रेगुलर है। अगर एल कॉम्प्लीमेंट रेगुलर है, यही एल्गोरिथम रिवर्स कर दो, एल कॉम्प्लीमेंट के लिए डीएफए बनाना, फाइनल नॉन फाइनल इंटरचेंज करो, दूसरा डीएफए आएगा, वो एग्जैक्टली एल एक्सेप्ट होगा। तो अब इसी एल्गोरिथम होगा, अगर नॉन रेगुलर का कॉम्प्लीमेंट रेगुलर होता, इसकी कॉम्प्लीमेंट वो होना चाहिए, है ना। तो अगर कॉम्प्लीमेंट रेगुलर है तो गिवन लैंग्वेज भी रेगुलर होना चाहिए था, बट नॉन रेगुलर का कॉम्प्लीमेंट रेगुलर कभी नहीं होगा। क्यों? अगर इसकी कॉम्प्लीमेंट रेगुलर है, रिवर्स ऑफ दैट कॉम्प्लीमेंट अगेन शुड बी रेगुलर, नहीं होता है ना। बात समझ में आ रहा है? अगर एक लैंग्वेज रेगुलर है, दूसरा भी रेगुलर होता है इसमें, तो एल रेगुलर होगा तो एल कॉम्प्लीमेंट रेगुलर, अगर एल कॉम्प्लीमेंट रेगुलर हो तो एल रेगुलर। तो ये है, तो स्टेटमेंट बता रहा हूं, एल इज रेगुलर इफ एंड ओनली इफ एल कॉम्प्लीमेंट इज रेगुलर। यही स्टेटमेंट दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है, ऊपर एंड नीचे। अगर ये नॉन रेगुलर होगा तो ये नॉन रेगुलर होगा, अगर ये नॉन रेगुलर होगा तो ये नॉन रेगुलर होगा, ये रेगुलर होगा तो ये रेगुलर होगा, ये रेगुलर होगा तो ये रेगुलर होगा। तो ये जस्ट इक्वलेंट स्टेटमेंट होता है दोनों के लिए, है ना। नॉन रेगुलर का कॉम्प्लीमेंट, कोई भी नॉन रेगुलर लैंग्वेज लेके कॉम्प्लीमेंट करना, वो नॉन रेगुलर ही होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको मैथमेटिक्स में मिलता है, बेसिकली फाइंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, इक्वलेंट, बाय इंप्लीकेशन। सिर्फ इसी के लिए नहीं, इसके लिए भी अप्लीकेबल है। तो इसलिए इस दोनों में एक रेगुलर है, दूसरा भी रेगुलर होता है, एक नॉन रेगुलर है, दूसरा भी नॉन रेगुलर होता है। तो अगर ये नॉन रेगुलर है, इनके लिए भी डीएफए नहीं होता, अगर इनके लिए डीएफए नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट के लिए भी डीएफए नहीं बनेगा। 10 अब रेगुलर लैंग्वेज के लिए आपको पढ़ना था, तो सिर्फ लिस्ट बताऊंगा क्या क्या क्लोज्ड है, क्या क्या नॉट क्लोज्ड है, ठीक है। फटाफट आप देख लेना फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस, ये पढ़ना था एक्चुअली टॉपिक।
वन, आपको पता है ऑलरेडी यूनियन। जो जो ऑपरेशन का नाम नहीं पता आप खुद ही पढ़ लेना, बट डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं अगर होगा। ये तो तीन बताया मैं, एक्सप्लेन राइट, तीनों ऑपरेशंस रेगुलर लैंग्वेज के लिए बताया बट प्रूव नहीं किया है। और भी है डिफरेंस, कंकैटिनेशन, रिवर्सल, क्लीनी स्टार। जो रेगुलर एक्सप्रेशन में देखा ना वही क्लीन स्टार है, लैंग्वेज के लिए अप्लाई किया है तो क्या होगा, क्लीनी प्लस, सबसेट। तो इसमें कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं, उनकी डेफिनेशन यहां एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज इसको पढ़ लेना। एग्जाम्पल्स में कुछ ऑपरेशंस को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। होमोमॉर्फिज्म, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है वो है कोएफिशिएंट। इस स्लाइड में जितने भी है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। प्रीफिक्स ऑफ ए लैंग्वेज, सफिक्स ऑफ ए लैंग्वेज एंड सबस्ट्रिंग्स ऑफ ए लैंग्वेज। तो आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा इस स्लाइड में। तो जिन लोग के लिए इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस नहीं पता, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में नोट्स मिलेगा, उस नोट्स को डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं इस चीज को। बट इसको पढ़ना बहुत टाइम लगता है तो इसको मैं अवॉइड कर रहा हूं। बट एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट होता कभी कभी, और सिंपल क्वेश्चंस क्या आएगा इसमें से, विच आर क्लोज्ड विच आर नॉट क्लोज्ड। तो इसमें से एक ही ऑपरेशन आपको याद रखना होता, वो है सबसेट। ये छोड़ के बाकी सारे क्लोज्ड है, तो सिर्फ इस ऑपरेशन को याद रखना होता। टेलीग्राम में सर्च करना देवा और स्पेस SIR स्पेस PW, तो ऐसे एग्जैक्टली सर्च करना, ग्रुप का नाम मिलेगा। ठीक है, किसी से पूछ लेना अगर कोई फ्रेंड है आप यहां पर। This is the only operation not closed for regular languages. Not closed for regulars. Except 7, everybody closed. इसलिए मैं कह रहा हूं व्हाट इज होमोमॉर्फिज्म, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन, ये पढ़ने के लिए एक एक ऑपरेशन आपको 10-15 मिनट लेता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। एक एक एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट कल की क्लास में मैं सॉल्व कर देता हूं, बट उससे पहले आपको होमवर्क करना पड़ेगा, यही आपका होमवर्क है। तो जो जो ऑपरेशंस आपको नहीं पता, व्हाट इज प्रीफिक्स, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, मैं होमवर्क मान के छोड़ रहा हूं इसको। जो जो ये होमवर्क है, क्या है होमवर्क, लर्न डेफिनेशंस ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑपरेशंस। क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ना है, यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट तो पता है, तो सेट डिफरेंस क्या है, ये नोट्स मिल जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, ग्रुप का नाम भी दे रहा हूं, तो वहां पर नोट्स डाउनलोड करके इस ऑपरेशंस का डेफिनेशन भी पढ़ लेना, एग्जाम्पल भी मिल जाता। ज्यादा टाइम 1-2 घंटा लगता है, तो ये जो टाइम मेरा लिए सेव होता है। ठीक है, और यार CS का भी ग्रुप है ना, तो उसको ज्वाइन कर लेना, गेट वाला ग्रुप भी है टेलीग्राम, वहां भी ज्वाइन कर लेना, वहां भी मिल जाएगा आपको, है ना। कंप्यूटर साइंस का स्पेशल ग्रुप भी है। कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, सॉल्व कर लेना फटाफट। L1 is equal to A star and L2 is equal to AA star.
आपको सॉल्व करना है L1 यूनियन L2, इज इट A स्टार? L1 intersection L2, is it A star? Identify just true statements. L1 dot L2, is it A star? L, देखो यही तो आपको प्रैक्टिस मिलेगा, इससे भी डेफिनेशन आप रिकॉल कर सकते हैं. A star. Which of the following is true? ये होमवर्क है और आंसर भी अभी दो. होमवर्क दे दिया तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं. अभी आंसर कर सकते क्या? L1 यूनियन L2. ए स्टार में क्या होगा समझ लो. जब ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है, स्ट्रिंग्स को लिखो ए स्क्वायर ए पावर 3, ये स्ट्रिंग्स होगा, सारे स्ट्रिंग्स होगा इसमें ओवर एस. इसमें सिर्फ इवन होगा, इसमें सिर्फ इवन नंबर ऑफ एस होगा. तो जब यूनियन किया है तो ये सही होगा, ट्रू. बट इंटरसेक्शन जब किया है तो इंटरसेक्शन में कॉमन देखना होता. कॉमन कौन कौन है? एप्सिलॉन है, ए स्क्वायर है, ए पावर 4 है. तो ये एक्चुअली ए स्टार फॉल्स है. क्या होना चाहिए था? डबल ए होल स्टार होना चाहिए था. और सी कनकैटिनेट किया है. जब कनकैटिनेट करोगे ये एप्सिलॉन सबसे कम कनकैटिनेट करना तो रिजल्ट ए स्टार दिखेगा. ये बिल्कुल ट्रू है. रिवर्सल ऑफ ये जो लैंग्वेज है, रिवर्सल करके देखो, एप्सिलॉन रिवर्सल ए स्क्वायर, सब सेम स्ट्रिंग्स मिलेगा आपको. ठीक, इस टाइप की क्वेश्चंस एग्जाम में पूछने के लिए चांसेस है. ठीक है, तो आप सॉल्व करके सिमिलर क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. यहां पर आपको सॉल्व करके कमेंट में डालना. ठीक है, ये स्टार्टिंग विथ ये है और ये स्टार्टिंग विथ बी है. तो आपको सॉल्व करना है. जो जो ट्रू है ये MSQ टाइप है सारे क्वेश्चंस. ठीक है, ये भी याद रखना. L1 यूनियन L2 A प्लस बी होल स्टार. L1 यूनियन L2 A प्लस बी होल प्लस. L1 इंटरसेक्शन L2 AMT. L1 इंटरसेक्शन L2 एप्सिलॉन. तो आपको सॉल्व करके कमेंट में डालना है. तो अगर अभी सॉल्व कर पाए तो अभी भी बोल सकते हैं आप. ये सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1 है. क्वेश्चन 1 तो सॉल्व कर लिया. क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3. L इज इक्वल टू ये पावर प्राइम. ठीक है, then choose correct statement. ठीक है, L complement is regular. सही पढ़ना. L star is regular. ये गेट टाइप की क्वेश्चन है बट थ्योरेटिकली पूछा था क्वेश्चन. L reversal is regular. None of this. इसमें से एक गेट क्वेश्चन भी है. ठीक है, इसमें से एक गेट क्वेश्चन भी है. तो होमवर्क करना, होमवर्क करने के बाद भी सॉल्व करो. अभी सॉल्व करना जरूरत नहीं है. अभी नहीं हो पा रहा है आपसे ये करना तो पहले रिवर्सल क्या है, क्लिनिक स्टार क्या है, आपको ऑलरेडी ऑफकोर्स ये पता है. क्लिनिक स्टार रिवर्सल भी सिमिलर है, रिवर्स करना होता है लैंग्वेज में एवरी स्ट्रिंग को. L is equal to A power n B power n. Then L complement is dash. A power m B power n such that m not equal to n. A power n B power n A power m B power n such that m less than or equal to n. G.
ए प्लस बी होल स्टार माइनस ए पावर एन बी पावर एन। ठीक है, बहुत इजी है चूज करना, और गलत चूज मत करना। और बहुत लोग ये चूज कर लेते हैं ऑप्शन ए गलत है, ये मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन ए सही नहीं है, इसको चूज नहीं करना है। ठीक है सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोबारा दे रहा हूं, बट इस टाइम में ऑप्शन अलग होता है, एक्चुअल आंसर होता है। ठीक है, देन एल कॉम्प्लीमेंट वही क्वेश्चन है, बट डेटा ऑप्शन अलग है। ए प्लस बी होल स्टार बी ए प्लस बी होल स्टार a power m b power n such that m not equal to n, or a plus b whole star union यह आंसर है पक्का एबीसी में। ये सॉल्व कर लेना 4 क्वेश्चंस। अगर आपको सारे डेफिनेशन समझ में आया तो कमेंट में डाल देना आंसर क्या है। देखो आज सेशन में हम रेगुलर लैंग्वेजेस को पढ़ लिया, बहुत सारे रेगुलर्स और नॉन रेगुलर्स को भी किया है, उसमें इवन फाइनाइट लैंग्वेजेस इनफाइनाइट लैंग्वेजेस को भी किया है। एंड क्लोजर प्रॉपर्टीज बेसिक जो डेफिनेशन से जो एग्जाम में पूछा जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट सबके लिए देखा है। और रेगुलर के लिए बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ना होता है, इसलिए लास्ट का होमवर्क दिया है, उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अभी कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर डाउट नहीं है तो हम कल सेम टाइम में 8 बजे प्रैक्टिस सेशन होगा रेगुलर लैंग्वेजेस के ऊपर। ठीक है, रेगुलर ग्रामर जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के साथ प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा मजा आएगा, तो अलग से करना जरूरत नहीं है। वही तो है समझना आपको, ब्लूलेस 5 का ऑप्शन मैं तो होमवर्क दिया है ना, तो समझना वही तो है आपको। 5 में ऑप्शन सी तो वही तो आंसर है, ये तो समझना इंपॉर्टेंट है ना। देखो ए पावर एन बी पावर एन क्या होता है, ए पावर एन बी पावर एन के अंदर, अब तो पूरा आंसर पूछ रहा है मुझसे। ठीक है, यही होता है ना, एक एक स्टेप लिख के समझना होता है, तभी इजी होता है आपको। अगर कोई भी कॉम्प्लीमेंट पूछा है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब सिग्मा स्टार माइनस ए पावर एन बी पावर एन होता है। सिग्मा स्टार में क्या होता है, सारे स्ट्रिंग्स होता है सिग्मा स्टार में, कोई स्ट्रिंग छोड़ नहीं सकते इसमें आप, है ना, सारे स्ट्रिंग्स होता है, इसमें से आपको हटाना होता है ए पावर एन बी पावर एन का स्ट्रिंग्स। ए पावर एन बी पावर में क्या है आपको पता है, इसमें से क्या हटेगा, देखो एप्सिलॉन हटेगा, है ना, और क्या हटेगा, ए बी हटेगा यहाँ है, और क्या हटेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बाकी सारे। तो बाकी जो स्ट्रिंग्स दिख रहा है वो देखो सिर्फ ए के बाद भी नहीं, बी के बाद भी ए आता है, तो क्या मिलना चाहिए आपको, देखो अगर इसी फॉर्म में आया तो आपको एक ऑप्शन होगा ए पावर एम बी पावर एन एम नॉट इक्वल एन, ये तो बिल्कुल रहेगा नो डाउट, बट इसी फॉर्म में नहीं होगा ना। देखो बी ए है, इस फॉर्म में है क्या, जो भी स्ट्रिंग इसमें नहीं आ रहा है वो बिल्कुल वो कंटेनिंग बी ए क्यों है, वो ए के बाद बी में वो ए भी अगर आया तो वो सीक्वेंस को बदलने के लिए बी ए चाहिए होता, तो बी ए अगर आया स्ट्रिंग के अंदर कहीं ना कहीं तो उससे पहले कोई भी नहीं है अगर चलेगा, बट अगर कोई बी ए आया स्ट्रिंग के अंदर वो इस पैटर्न में नहीं होता, वो बिल्कुल इसके अंदर होगा वो। तो देखो ये बी ए छोड़ के ये इसमें कवर होता है, बी भी इसमें कवर होता है, डबल ए भी इसमें आएगा, डबल बी इसमें आएगा, अगर जो स्ट्रिंग इसमें नया आएगा वो उसमें बी ए दिखेगा पक्का।
तो कंटेनिंग बी ए वाला बिल्कुल दिखेगा, सारे, एक भी नहीं, सारे कंटेनिंग बी ए वाला दिखेगा। जो बी ए कंटेनिंग बी ए फॉर्म में नहीं होता, इसी फॉर्म में होता है, बट दोनों नॉट इक्वल होता है बस। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लगने वाला है ये स्ट्रिंग्स को समझना। सिग्मा स्टार में ये स्ट्रिंग्स को हटाने के बाद, इस स्ट्रिंग्स को हटाने के बाद, सिग्मा स्टार मतलब क्या है, ये है सिग्मा स्टार मान लो, इसमें क्या हटाना है आपको, ए पावर एन बी पावर एन हटाना है। ये है ए पावर एन बी पावर एन, ये है ए पावर एन बी पावर एन। यहां क्या रहेगा, ये आइडेंटिफाई करना है। यहां क्या रहेगा, दो टाइप के स्ट्रिंग्स होता, एक टाइप में ए पावर एम बी पावर एन एम नॉट इक्वल एन, दूसरा टाइप होता है यूनियन। इसमें जो स्ट्रिंग्स इस फॉर्म में नहीं, ये तो ए स्टार बी स्टार है ना, अगर ये दोनों यूनियन के तो ए स्टार बी स्टार, ये तो ए स्टार बी स्टार नहीं है। अगर ए स्टार बी स्टार होता है, ये आंसर सही है, ये आंसर सही है। इसमें जो नहीं है, इसके बाहर वो होगा, बट ये ए स्टार बी स्टार नहीं है, ये क्या है, ए प्लस बी होल स्टार है। तो यहां क्या होना चाहिए, यूनियन कंटेनिंग बी ए वाला भी होगा। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है। देखो ए स्टार बी स्टार आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पावर एन बी पावर एन यूनियन ए पावर एम बी पावर एन नॉट इक्वल, इसमें इक्वल है, इसमें नॉट इक्वल है। अगर दोनों को यूनियन किया है, ए प्लस बी होल स्टार नहीं आता है ना। अगर ए प्लस बी होल स्टार चाहिए तो अगर इसके साथ लिखना है ए पावर एन बी पावर एन यूनियन, और ये भी लिखना है सपोज, और इसके साथ और क्या चाहिए होता, यूनियन कंटेनिंग बी ए चाहिए होता। अब इसको देख के बताना कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये वाला, ये दोनों होता है। अगर इसको कॉम्प्लीमेंट करना है, ये दोनों होता है। अगर इसको कॉम्प्लीमेंट करना है, ये दोनों होता है। मतलब ए स्टार बी स्टार, ये दोनों मिलके ए स्टार बी स्टार होता है। ठीक है, अब ए स्टार बी स्टार को कॉम्प्लीमेंट किया, बिल्कुल ये लिखना होता है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ए प्लस बी होल स्टार। इसके साथ देखना है कौन कौन को यूनियन करना है। ए पावर एन बी पावर एन के अलावा ये दोनों चाहिए होता, तभी ए प्लस बी होल स्टार मिलेगा। और इसको कॉम्प्लीमेंट किया, ये दोनों रिजल्ट में होगा। इसको कॉम्प्लीमेंट किया, ये दोनों रिजल्ट में होगा। अगर इसको कॉम्प्लीमेंट किया, ये पूरा रिजल्ट में होगा। इसका मतलब ए स्टार बी स्टार होता है। अगर इसको देख के भी आप ए स्टार बी स्टार को कॉम्प्लीमेंट किया है, तो आंसर क्या होगा, अब होता है इसको कॉम्प्लीमेंट किया, तो ये आंसर होगा सिग्मा स्टार बी ए सिग्मा स्टार। रिवीजन का क्लासेस भी होंगे ना आशीष राज, अगर पर्टिकुलर रिवीजन देख रहे हैं तो लास्ट में ये भी कोशिश करेंगे हम रिवीजन का भी। अगर देखो लास्ट ईयर भी किया था महा रिवीजन पीवाईक्यू सीरीज, उस वीडियोस को भी आप देख सकते होंगे। हम तो हमेशा मदद कर रहा है ना। ठीक है, एनी अदर डाउट? तो एम इक्वल एन का कॉम्प्लीमेंट एम नॉट इक्वल एन होता है, बट हम एम एन को नहीं कर रहा है, लैंग्वेज को कर रहा है। ठीक है, डन। डिटेल में चाहिए, डिटेल टेक्स्ट बुक में होता है बिल्कुल। ठीक है, बहुत डिटेल चाहिए तो टेक्स्ट बुक बेहतर है, क्योंकि गेट एग्जाम के लिए बहुत डिटेल्ड जरूरत नहीं, इतना टाइम नहीं है ना हमारे पास। अभी सिर्फ टीओसी है, गेट एग्जाम है, तो बहुत डिटेल पढ़ लेना। अभी 12 सब्जेक्ट को कवर करना है ना, बहुत डिटेल जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है अभी इस समय में स्पेशली। अगर 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो यस, पीडब्ल्यू में ऑलरेडी है ना बहुत सारे बैचेस है, उसमें ना डिटेल कोर्सेस हम पढ़ाते हैं। राइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच, विल मीट टुमारो, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।